All right, so basically, in summary, as I said, first step is to get rid of the intense positive feeling associated with the behavior, and the second step is to get rid of the negative belief. So yeah, so that's the complete process. Well, does this work or not? Um, Mirror also has a case study on it. So this entire technique was applied on John, who had a gambling disorder. John also has problems in his marriage. He's in depression, and because of gambling, he borrows money from lots of people, and so कर्जा भी है. So this is a problem. मिरर क्या करेगा इसका वो पूरी की पूरी थेरेपी मार देगा. EMDR, impulse control disorder therapy. So yeah, so John की क्या कहते हैं गैम्बलिंग के साथ इंटेंस पॉजिटिव फीलिंग जुड़ी हुई है तो समथिंग जॉन विल थिंक अबाउट दीज थिंग्स ऐसे thoughts about gambling, emotions regarding with gambling, and physiological experiences associated with gambling. So same thing, John का जो क्या कहते हैं इंटेंस पॉजिटिव फीलिंग है उसको इमेजिन करवाते हैं, राइट? You make him imagine the क्या कहते हैं फीलिंग स्टेट, तो ऑब्वियसली स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी रिक्रिएट करवा रहे हो EMDR के जरिए. इसकी जो इंटेंसिटी हो जाएगी कम हो जाएगी, राइट, फीलिंग स्टेट की. एंड उसके बाद जब फीलिंग स्टेट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी देन यूर गोना डू द एग्जैक्ट सेम EMDR थिंग with negative beliefs of John. So yeah, does this work or not? Well, yes, it worked. Okay, it reduced John's urge towards gambling. So yeah, and number two, it worked. It only took 4 sessions to work. So yeah, it's very quick. Number three, John was fine even after 1 month after therapy. So John was fine even after 1 month of therapy. Uh, if you want further behavior, further proof, so basically follow up क्या पता चला कि John की gambling, see, we don't want to stop make John stop gambling. Gambling करो मसला नहीं है लेकिन don't be addicted to gambling. So basically, this is proof that John was no longer addicted to gambling. कि he did gambling लेकिन but he knew now कि अब उसको कब उठना है कब बैठना है. वो पैसे uncontrollably शर्तों पे नहीं लगाता था. And then he was able to have a happy relationship and have a stable job. So this is proof. So so EMDR वाला जो सीन है जो पूरा पूरा impulse control disorder therapy है. Strength and weaknesses. Strength, it is quick acting, as you can see in the case study of John. Strengths, it has no side effects. Strength, क्या कहते हैं, no side effect. It makes the person become independent. Weakness relies on a person's good imagination, right? Weakness relies क्या कहते हैं, the person's to be willing to do this therapy. If the person is not willing to do it, काम नहीं करेगा. Weakness, the scales that we used in this therapy, positive feeling scale and subjective unit disturbance scale, सारा का सारा self report है, the person can lie on the scale. Um, yeah, apart from this, ठीक है ना, जॉन की केस स्टडी इज क्या कहते हैं नॉट जनरलाइजेबल, राइट? Is this therapy replicable? Yes, क्योंकि you have these questionnaires. These are standardized, so it can be replicated. Is it reductionist? Yeah, you can say yes, in the sense that it's only focusing on the cognitive element, not considering the biological aspect. But you can say no, it's holistic as well, because it's a combination of two therapies. So either answer is correct. Nature nurture, is it nature nurture? It's completely nurture, because you're kind of making the person break the association, right, with regards to the intense positive feeling. You're making the person unlearn their negative belief, right? So basically, you're making the person unlearn something. So this process requires a nurture aspect. You're changing the person's behavior, right? At the end, you change the person's behavior, and changing of a person's behavior is nurture. You're making the person develop healthy habits. Um, Free will deterministic. Free will completely. The person cannot do this if the person is not willing to. Okay. Yeah, I guess that's it. So जो CI के अंदर जो बेसिकली तुम लोगों को क्या लिखना है, तुम पूरा का पूरा लिखना है ये सारा EMDR क्या है, फिर उसको किस तरह एसोसिएट करवाते हैं. Yeah, but not in depth. CIE asks you कि भाई EMDR किस चीज को कहते हैं.
और इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर प्रोटोकॉल क्या कहते हैं? तो सबसे पहले तुम्हें मालूम होना चाहिए ईएमडीआर ट्रॉमा का इस्तेमाल होता है और वहाँ पर सब्जेक्टिव यूनिट्स ऑफ डिस्टर्बेंस स्केल लगाते हैं। इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर प्रोटोकॉल के लिए आप इंटेंस पॉजिटिव फीलिंग रिड्यूस करते हो एंड पॉजिटिव फीलिंग्स के इस्तेमाल करते हो। बस ये दो एस्पेक्ट याद करना है। द इंटायर मैकेनिज्म ऑफ इट, ठीक है ना, तुम लोग को याद नहीं करना। सही है। सो बेसिकली अकॉर्डिंग सी आई मिरर की जो समरी क्या होगी, मिरर की समरी ये होगी कि ये जो थेरेपी है ना हम इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे ये सब बकवास है। तुम लिखोगे जहाँ पे मिरर क्या करेगा, ही इज गोइंग टू ब्रेक द एसोसिएशन ऑफ feeling state with the memory of a behavior through EMDR measured through positive uh, feeling scale. Then he is going to reduce the intensity of the negative belief using EMDR, and he's going to measure the effectiveness using the subjective units of disturbance scale. So yeah, you can even quote the case study of John at the end if you want to. बहुत छोटा सा इतना बड़ा भी नहीं है. This you can you don't need to write these paragraph एक बड़ा वाला yeah ये वाला इतना लाजमी है, ये वाला इतना लाजमी है जो नीचे वाला, but the first half I don't think you need to write this क्योंकि कि सारा का सारा जो intense positive feelings के बारे में लिखा हुआ है, and this is the क्या कहते हैं causes not the treatment यहाँ से शुरू हो रही है. So you can skip the first part and write your own better version of it. Two differences मैंने अभी हमने discuss कर लिया. Strength and weaknesses of using case studies to investigate impulse control therapy. So basically, if you wanna investigate whether his technique works or not, using case study क्या मसला होगा? जनरलाइजर का मसला होगा, but जनरलाइजर का मसला होगा. नंबर टू, केस स्टडी का ये भी मसला होगा कि अगर लॉन्गिट्यूडनल एस्पेक्ट पे चला गया तो पर्सन कैन ड्रॉप आउट या रिसर्चर बायस आ सकता है बिकॉज दे फॉर्म अटैचमेंट टू द सब्जेक्ट. गुड थिंग इज के केस स्टडी के अंदर इन डेप्थ डेटा निकल के आएगा. गुड थिंग ऑफ केस स्टडीज के यू गेट टू क्या कहते हैं, apart from getting in depth data you get to study unique cases, treat unique cases, ठीक है ना, which adds knowledge into the field, ठीक है. uh, good thing about क्या कहते हैं case study is that it can show you how different impulse control disorders can be treated differently, right? So it can tell you how one treatments differ from the other another भले वो same disorder का हो रहा होगा. So you get a lot of details and different results. Bad thing is it cannot be replicable, obviously. Discuss the advantages disadvantages of psychological. अच्छा देखो ये psychological technique है ना, psychological technique का मतलब होता है therapies. सही है. तो basically if you divide your therapies into methods, two branches, drugs अलग जा रहा है, psychological technique अलग जा रहा है. सही है. अब साइकोलॉजिकल टेक्निक के कौन से टाइप्स होते हैं, कॉग्निटिव होगा, कॉग्निटिव बिहेवियर होगा या प्योरली बिहेवियर होगा, वो अलग कहानी है. गुड थिंग इज कि तुम्हारे पूरे के पूरे ट्रीटमेंट है, थेरेपीज है, ये साइकोलॉजिकल टेक्निक्स है इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर के सारे कॉग्निटिव बिहेवियर है और एक ड्रग थेरेपी है नैनोट्रॉक्सोन वाला. सो यस, बट एनी टाइम जब यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेक्निक देखो ना, जस्ट प्लीज रिमेंबर कि थेरेपीज की बात करें, नॉट ऑफ ड्रग्स. सो ये and that's it. Do you guys have any question about this chapter or the impulse control disorder protocol therapy, whatever? Yep. Alright guys, अब मुझे क्या करना है, ठीक है ना, कि I want to have your क्या कहते हैं like a mini mock only of the entire section of abnormal psychology, right? So please tell me when is it possible for you guys to give the mock for abnormal psychology पूरा का पूरा section जो होगा. Is 2 weeks enough? 2 हफ्ते
फॉर एग्जांपल ये मंडे नहीं, इसके अगले वाला मंडे, ये इसके वाला सैटरडे, ये वाला सैटरडे इसके अगले वाला सैटरडे. Yeah, if you cannot answer right now, you can confer among yourselves, and you know what, तीनों मिलके give a um, unanimous opinion जो भी तुम लोग कहना चाह रहे हो. अच्छा, अब हम क्या करेंगे? We're not gonna start health right off the bat, right? We're not gonna do that. We need to practice question for abnormal psychology, get it said, then we move on to health psychology. तो basically what we're gonna do is, मैं सैटरडे को क्लास नहीं दे सकता इस वाला सैटरडे को, ठीक है ना? तो इसका ऑल्टरनेटिव डे मुझे बता देना. आई एम थिंकिंग अराउंड समथिंग लाइक वेंसडे. इफ वेंसडे वर्क्स आउट फॉर यू, 2:30 p.m. वाला सीन वेंसडे, प्लीज लेट मी नो, ऑल थ्री ऑफ यू. एंड उसके अंदर we're gonna solve past papers in the class, ठीक है? we're not gonna move on health cycle. Sir, Yeah, बोलो sir, बोलो. जो mini mock होगा, would that be paper 3 and paper 4 both? Yep, combined. Okay. All right, so yeah, I'm gonna sign off now. Homework, yes. Basically, yeah, यहाँ पे क्वेश्चन था नहीं है. Design a study to find out the effectiveness of impulse control disorder therapy gambling disorder. So yeah, क्वेश्चन ये है. क्वेश्चन एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना जहाँ पता लगाना कि is this therapy effective or not, right? um, you can take a hint from grant वाली study, क्योंकि उसके अंदर भी effectiveness of drugs टेस्ट किए थे. So that can kind of help you out कि तुम्हें किस तरह carry out करना experiment now. But this is your homework, ठीक है? Are there any further questions? All right, तो फिर I'm gonna sign off.